Hi everyone and very good evening. Welcome to BYJU'S Exam Prep and my name is Alpa Sharma. I hope I'm clearly audible and visible to everyone watching me live. Today is yet another session in the series RC Master Class and we shall be discussing one passage on the topic anthropology. So we've been having this series for quite a while. We've discussed many topics over and over again, topics on which RCs may come in the examination. We discuss these topics, we understand how to approach these passages. We also solve one RC in the series that we have going on in every class. So if you quickly confirm that I'm clearly audible and visible, we shall commence with our session very quickly. I hope you've seen our older videos on under the series RC Master series under the classes, and we've taken many topics previously. For example, philosophy या psychology या cryptocurrency, वो topics जिस पे passages examination में आए हैं या आ सकते हैं. ये वो करंट अफेयर टॉपिक्स है जो आजकल बहुत न्यूज में हो रहे हैं. तो अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आई एम श्योर यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दीज टॉपिक्स. एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसपे अगर आप क्लैट की पूरी हिस्ट्री में देखोगे ना, जब से क्लैट का इंसेप्शन हुआ है, बहुत सारे ऐसे पैसेजेस आ चुके हैं जो एंथ्रोपोलॉजी को डिस्कस करते हैं. सो विल बी हैविंग अनदर सच आरसी टुडे. एक्सट्रैक्ट है द हिंदू से, पढ़ेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे, अप्रोच देखेंगे कि उससे मेन आइडिया कैसे निकालते हैं. तो आरसी को मास्टर करेंगे, साथ में इसका जो एक्लेक्टिक रीडिंग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग है, वो भी करने की कोशिश करेंगे, उसको भी मास्टर करने की कोशिश करेंगे. तो ये है ये हमारी जो सीरीज है उसका एजेंडा. एक बार जल्दी से देख लेते हैं, गिव मी अ सेकंड. जल्दी से देख लेते हैं अभी हम क्या करने वाले हैं क्लास में. सो वी आर गोइंग टू हैव डिफरेंट जॉनर्स दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग अंडर द सीरीज. आज का जॉनर है एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी क्या है वो समझेंगे. एंथ्रोपोलॉजी पे एक पैसेज, एक अनसीन एक्सट्रैक्ट देखेंगे और उस पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी पे बेस्ड कैसे पैसेज आ सकते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे. और एंथ्रोपोलॉजी क्योंकि एक कोर साइंस नहीं लेते हैं बहुत सारे लोग, तो उनके लिए उसको समझना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है अगर वो एग्जामिनेशन में आ जाता है. तो एग्जामिनेशन में आना बहुत लाइकली भी है क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है पास्ट में. अगर वापस एग्जाम में आता है तो इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, ये होगा हमारा आज का एजेंडा. ठीक है. Before I start with what is anthropology, we have our scholarship test going on, which is going to be happening on 19th of February, 11 a.m. So if you are somebody who wishes to prepare for CLAT 2024, this is the right time. Sit for the scholarship test. God willing, you should be able to avail lots and lots of scholarships on your course fee structure. Sit for the test, but remember you need to register yourself before you take this test. There are only limited seats. Rush up, register yourself, take the test and win scholarships. Also, we have a CLAT 2024 comprehensive course that we have launched for people who are aiming for CLAT 2024. If you are somebody who wishes to prepare for CLAT 2024, this is the right platform. This is the best platform. We have a comprehensive program that includes many live classes, many recorded classes, many tests, and a lot of other things. To know more about the program, you can speak to a counselor on this specific number. Alternatively, ऐप डाउनलोड करो, ऐप में भी नंबर सेव्ड है, स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे भी कॉल कर सकते हो. नो मोर अबाउट द प्रोग्राम, बट स्कॉलरशिप टेस्ट मिस नहीं करना. ठीक है. नाउ दैट वाज अबाउट आवर प्रोग्राम एंड द स्कॉलरशिप टेस्ट. अब देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी चीज क्या होती है. ठीक है, इस वर्ड को हम ब्रेक करके देखते हैं. एक वर्ड हो गया लॉजी, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी. ठीक है. दूसरा वर्ड है एंथ्रो. एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन. ओके, समथिंग्स रॉन्ग विथ माय पेन. इसका मतलब है ह्यूमन. तो ह्यूमन लाइफ की स्टडी टेक्निकली होती है एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी ये तो एक लेमैन डेफिनेशन हो गई. अगर आप इसकी एटिमोलॉजी पे जाते हैं, इस वर्ड को ब्रेक करके देखते हैं, तो ये हो गया एंथ्रोपोलॉजी. बट अगर आप इसकी साइंस की डेफिनेशन पे जाते हैं, इट्स बेसिकली द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस बाय स्टडीइंग कल्चर्स. ठीक है. तो सोसाइटी में लोग कैसे, सोशियोलॉजी थोड़ा डिफरेंट हो गया. सोशियोलॉजी होता है सोशल बिहेवियर देखना. एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन ये बिहेवियर क्यों करता है, ह्यूमन के कल्चर्स क्या हैं, सोसाइटी में चीजें किस तरीके से फंक्शन करती है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैसे हुआ, ऑल ऑफ दैट collectively combines to be anthropology. Okay, so it in detail studies
कल्चर, सोसाइटी, ऑल ऑफ दैट। देखो ध्यान रखना, आपको लगेगा कि ये सोशियोलॉजी से एक इंटरलिंक्ड सेक्शन है, साइंस है, ऑफ कोर्स है। ये जितने भी साइंसेज है, जैसे आप साइकोलॉजी देखेंगे, एंथ्रोपोलॉजी देखेंगे, सोशियोलॉजी देखेंगे या गवर्नेंस देखेंगे, ये सारे साइंसेज ना आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये है तो ह्यूमन की ही स्टडी। तो ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करना, ह्यूमन की सोसाइटी की स्टडी करना, ह्यूमन के कल्चर की स्टडी करना, दे हैव टू बी इंटरलिंक्ड साइंस। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंथ्रोपोलॉजी क्या हुआ। एंथ्रोपोलॉजी हुआ ह्यूमन और उसके बिहेवियर की स्टडी करना, उसके डेवलपमेंट की स्टडी करना, उसका सोसाइटी में रोल क्या है, वो क्या कल्चर्स फॉलो करते हैं, इनको हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। अब एंथ्रोपोलॉजी पे बेस्ड आई हैव एन एक्सट्रैक्ट फॉर यू। ठीक है, इट्स स्प्रेड ओवर 5 पेजेस। आई वॉन्ट यू टू वेरी केयरफुली रीड दैट। ऑल तो इसकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपली पुट लैंग्वेज है, तो आपको समझने में इस पैसेज को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो धीरे धीरे इस पैसेज को पढ़ो और समझो इस पैसेज में एंथ्रोपोलॉजी का रेफरेंस क्या दिया है ऑथर ने, और कैसे ये पैसेज एक एंथ्रोपोलॉजिकल पैसेज है। एंथ्रोपोलॉजी जैसा वर्ड इस पूरे पैसेज में यूज नहीं है। तो आपको ये देखना है कि मैंने इस पैसेज को एंथ्रोपोलॉजिकल पैसेज क्यों टर्म किया है, और ध्यान से पढ़ो, बिकॉज देयर आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू बी आस्किंग यू आफ्टर द एक्सट्रैक्ट दैट आई गिव यू। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है जब हम इस पैसेज को पढ़ेंगे, वो ये है कि आफ्टर एवरी पेज आपको एटलीस्ट 2 to 3 वर्ड्स लिखने हैं जो डिफाइन करेंगे उस पूरे पेज के जिस्ट को। आपको वो वर्ड्स लिख के बताने हैं। ठीक है, ये वर्ड्स पूरे पेज का एक नटशेल देंगे आपको, जिस्ट देंगे आपको। मैं क्यों बता रही हूँ ये लिखने के लिए, बिकॉज वंस यू रीड देम and once you write these words, knowing the main idea of the passage is going to be easy for you, because I ultimately am going to ask you the main idea of the passage like every class. So after every page आपको 2 to 3 words लिखने हैं जो उस पेज का मेन आइडिया, उस पेज की इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करें। गुड टू गो एवरीवन। एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो मुझे, तो मैं पैसेज स्टार्ट करती हूँ। आई विल शो यू द पैसेज एवरीवन। क्विकली सेंड मी अ थम्स अप, जल्दी बता दो मुझे दैट एवरीवनस क्लियरली दे कैन हियर एंड सी मी। ठीक है, चलते हैं पैसेज के साथ। Here is a very first page. Read the page and send me done in the chat box once you're done reading this very quickly. Hi Krishna, hi Namra. Okay, Krishna. Let's go to page number 2, everyone.
Send me done once you're done reading the page. Remember to highlight the words. Changing the slide. Done. Okay.
Changing the slide. And the last page. Okay. That was the end of the passage. Everyone, did you understand why is this passage based on anthropology? Did you figure that out, everyone? One, it talks about humans. It talks about human behavior pertaining to how cultures would impact a specific kind of behavior. Why women are they work harder than men do? What are the factors that contribute to it? A lot of it relates to cultures, a lot of it relates to societies, how things function in societies. When a woman gets married, she usually moves to the husband's house. Very rarely the husband moves to the woman's house, and extremely rarely they stay at their own places. So it's society, culture, and all of that coming together, impacting the behavior of human in the society. All of that is anthropology. This is an anthropological study that is being uh, covered up in the entire passage. ठीक है, अब एक बार passage समझने की कोशिश करते हैं. Okay, here we go. So इस passage में this is the very first page. Okay, and when you read the first page, can you name 2 to 3 important words that will define the entire page? 2 to 3 words that are important in this page. 1 word, 2 words, 3 words, anything that you think are important in this page. I'll highlight some for you after you tell me the words. 2 to 3 words that define the entire page. Okay, so I'll tell you. One is physical work, an important word. Okay, then there is a study that is being discussed here. Okay, plus it's a culturally diverse place where the study is happening, and of course it is between women and men. So these are a few words. I'll highlight men as well. So I think the highlighted words that I have shown you on the slide, I think these words are important. Physical work, men or women, comparison between who does more physical work. There's a study that is being discussed in the second paragraph. The study is being conducted in Tibet, which is a culturally diverse area. Okay, study में क्या होता है, next page पे चलते हैं, देखते हैं. Study में क्या हुआ? They started first they studied
a general psyche of society. That is, when marriages happen, women go to the husband's house. Yeah. And of course, once they go to a house that they are not connected to by blood, there is an unequal bargaining power in the household. I think this line is very, very important. How do they have an unequal bargaining power? Women are on a less powerful position than the husband is, of course, because the wife has moved to the husband's house. So bargaining power अब unequal हो जाती है. Males have more bargaining power here than the women have. ठीक है. अब इसके बाद उन्होंने यही जो हाइपोथेसिस थी अनइक्वल बार्गेनिंग पावर, ठीक है, उसको उन्होंने अप्लाई किया इस सिनेरियो पे. जब ब्लड रिलेशन नहीं होता तो कैसे अनइक्वल बार्गेनिंग पावर आ जाती है. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. ये तो इस पेज का जिस्ट हो गया, ठीक है. नेक्स्ट पेज सेज देयर आर अ फ्यू वर्ड्स दैट आई हैव हाइलाइटेड. जब आप पढ़ रहे होंगे पैसेज तो आपको लग रहा होगा कि ये वर्ड्स हमने कभी नहीं देखे, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ देम, बट इट्स एब्सोल्युटली ओके क्योंकि इन वर्ड्स के मीनिंग्स आपको इस पेज पे मिलेंगे. सो इफ देयर इज patriloquiality, one you can always break the word. If you know etymology, आपके लिए word बहुत आसान होना चाहिए. Patri is for males, father. Okay, locality, LOC is another root word which means place. ठीक है, तो उस locality में किस पे dependent है hierarchy और society? Patri पे, that is fatherhood पे, that is in terms of male dominance पे, जहां एक वुमेन को अपना घर छोड़ के अपने हस्बैंड के पास आके रहना पड़ता है. ये सबसे कॉमन सिचुएशन है जो हम पूरे वर्ल्ड में देखते हैं. फिर कुछ रेयर सिचुएशन होती है, वो है मैट्रिलोक्यालिटी, जहां हस्बैंड वाइफ के घर जाके रहता है. ठीक है, ही लीव्स हिज ओन हाउस एंड स्टेज विद द ब्राइड. और सबसे एक्सट्रीमली रेयर क्या हुआ? डुओ लोकेलिटी, दोनों अपने अपनी लोकेशन पे रहते हैं. ये तो हुआ हस्बैंड की लोकेशन पे, ये हुआ वाइफ की लोकेशन पे. यहां वो दोनों अपनी अपनी लोकेशन पे रह रहे हैं, कोई कहीं भी जाके नहीं रह रहा, वो अपनी अपनी लोकेशंस में. दैट्स डुओ लोकेलिटी. ठीक है, तिब्बतन बॉर्डरलैंड क्योंकि इतना डाइवर्स था, वहां ये सब कुछ देखा अलग अलग तरीके से, और उससे उन्होंने ये क्या फिगर आउट किया? द कंक्लूजन वाज गिवन टू अस इन द नेक्स्ट पेज कि women work harder than men in every scenario. ठीक है, उनका हाउस होल्ड वर्क हुआ, फिजिकल वर्क हुआ, आउटडोर वर्क हुआ, इंडोर वर्क हुआ, सब मिला के, क्योंकि उन्होंने फिटबिट जैसा एक एक्सेस डिवाइस दिया था, इट वाज लाइक अ स्मार्ट वॉच दैट वुड काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स. women obviously had more steps than men did. Automatically ये prove हो गया that women do more physical work, they work harder than men do. I'm very proud of this passage though. ठीक है, अब अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकाला कि ये जो सेक्स इनइक्वालिटी है ये बहुत परसिस्टेंट है, लेकिन ये कंक्लूजन है पैसेज का कि अब ये चीजें चेंज हो रही हैं. थिंग्स आर चेंजिंग नाउ. क्या रीजंस दिए चेंज होने के? वन, क्योंकि अब मोस्टली जो हस्बैंड वाइफ है वो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, वर्क के लिए मेट्रो सिटीज में रहते हैं, तो ये डोमिनेंस जो होती थी ना एक ग्रूम की फैमिली की, वो बहुत कम हो गई है. Two, women are now they earn money, so they have self generated wealth, they are educated, they have a say in the relationship. तो इन reasons की वजह से ये जो sex inequality है ये reduce हो रही है. अब क्योंकि मैंने आपको पैसेज समझा दिया, can you name 3 or 4 words that will define the main idea of the passage? Who's going to tell me what is this passage about? In one line, maybe you can highlight 3-4 words. You can tell me the main idea in one line. I'm going to wait for your answers. What do you think is the main idea of the passage? What is the main idea of the passage? Let me see if you guys can try. Okay, so according to me, Krishna, Namra, any idea?
इस पूरे पैसेज को एक लाइन में कैसे डिफाइन करोगे? मेन आइडिया. According to me, a few words that are important were study, okay, sex inequality. Something's wrong with my pen. I'll get that fixed. ठीक है? Inequality बहुत illegible है, but it's my handwriting is not as bad. The pen is the culprit. ठीक है? Study, sex inequality, physical work. Physical work, ये कुछ चीजें हैं, ये 3 words है जो पूरे passage का gist explain करते हैं. So the idea is why women work harder than men, an anthropological study. The study defined this difference between different sexes and how one works harder than the other. Send me a thumbs up if it agrees. Unequal bargaining power, yes Sushmita, agreed. Gender evolution नहीं है बच्चे, gender inequality हो गई, ठीक है? That's another word. Agreed. Sushmita and Mohammed, Arsh agreed with the terms that you've mentioned. On that note, what do you think is not the meaning of the word dispersers? एक बार options देख लो. I'll take you back to the passage जहां dispersers लिखा हुआ था. We'll read the line again and we'll try to figure out dispersers का कौन सा meaning नहीं है. So the options are dissipate, vanish, attenuate, and collate. Let's go back to the statement where dispersers was mentioned. Oh, it's right here. Okay, dispersers. So the most common form of marriage around the world is where women are the dispersers. They leave their native home while men stay with their families in their natal area. Now let's go back to the options and see which of the following is not the meaning of dispersers. Women were dispersers in that sentence. Give this a try, everyone. Decollate. Vritant. Okay. All right. See, dispersers were used for women. Why? Because they moved away from their native place, went to the husband's natal place. They moved away. Dissipate is to move out, move away, spread out. Vanish also is to remove. Attenuate also is to remove. On the contrary, collate is to collect. It's the opposite, rather, to the word disperse. Opposite to disperse. Disperse is to spread out. Collate is to gather. So the correct answer is going to be a D. It is D, which means to gather. Every other word means to disperse or spread out or move out. I hope that makes sense, everyone. And that for today is going to be all, my kids. Do not leave the session without hitting the like button. Also, subscribe to the channel if you still haven't done that yet. You can follow us on Instagram, Facebook, Telegram. The links of all of these are there under my video in the description box. You can also download our app, BYJU'S Exam Prep Law, on Google Play. And I shall see you again very, very soon with another class where we're going to be discussing more topics on under the series RC Master series. See you soon, everyone. Have a very good day. God bless you.